Hello everyone, welcome to the channel Physics 1. So I am back with second question of properties of matter in build up your understanding, right? So in this video we are going to understand, हम लोग समझेंगे क्या concept है इसमें, what is the question, how to start the question, what we should be thinking first, right? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए इस question को solve करने के लिए. So we are going to discuss concepts and then इसके बाद हम इसका solution discuss करेंगे, right? So let us start. So first I'm going to read this question. So there's a steel plate and aluminium plate, each of length L and width B, right? So you can see the diagram, length L, width B. They are welded to make a composite plate, right? So this thing you can see here, they are welded. The thickness of steel plate is TS. So this plate, let us say, is steel plate, thickness is TS. And that of aluminum plate is T. So this I'm now marking as thickness TS, and this is, let us say, aluminum plate. For this thickness here is TA, right? Now Young's modulus of steel and aluminum are YS and YA. Young's modulus for both the plates are given. We have to find out the force constant of the composite plate along X, Y, and Z axis, right? Fine. So if you are not able to understand the question, you can pause the video and read the question once again. Basically, I will put this in simple category. Simple question है ये. Pathfinder के level के हिसाब से काफी simple question है, right? So पहले हम लोग देखते हैं कि what all concepts are going to be used in this. So this is the concept, right? Simple concept. So suppose there is a rod. So you can see this is a rod, right? And then on this face, suppose you are applying a force F. And this is the area A, right? This is cross section area. Cross section means if you cut the rod from the middle, then you're going to see this area. तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये इसकी लेंथ L है, एंड सपोज ये रॉड है, अगर कॉपर की रॉड है, एल्यूमिनियम की रॉड है, स्टील की रॉड है, तो उसका कुछ यंग्स मॉडुलस रहेगा, है ना? यंग्स मॉडुलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, राइट? तो यंग्स मॉडुलस इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. सपोज यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस इज y, तो इसका फोर्स कांस्टेंट होता है Ay/L, राइट? तो ब्रीफली इसको समझते हैं कि कैसे ये Ay/L आता है, कहाँ से आता है. तो आप में से सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू, विद इन हुक्स लिमिट, stress is proportional to strain, right? And stress by strain is equal to Young's modulus, right? तो मैं यही रॉड लेता हूँ, जिसमें हमने अगर फोर्स F लगाया, तो what will be the stress now? The stress is F divided by A, right? Force by area. This is longitudinal stress, and there will be a change in length due to this, so there will be strain also. So strain in this is going to be delta L by L. Delta L क्या है? Change in length. So suppose this is original length L, then there will be small change in length. Diagram नहीं draw कर रहा हूँ मैं. Up you can, I think you can understand. So delta L by capital L, I should write, because the original length is L. Strain is change in dimension divided by original dimension. So stress है F by A. The strain is this. Stress by strain is Young's modulus. So let us see what do we get. F by A, stress by strain, delta L by L is equal to Young's modulus. तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये आता है F is equal to Ay by L into delta L, right? Now you should be able to relate this to something which you have done before, something which is very simple. So this formula is basically you have studied, right? You have studied even in 10th class also, 9th class also. कौन सा formula है? F is equal to Kx, right? This is X. In spring, what was X? X was X compression था, elongation था, right? यहाँ पर भी वही है. Delta L is the elongation, change in length. अगर आप ऐसा फोर्स लगाओगे तो रॉड elongate होगी. If you apply a compressive force, rod will compress, है ना? तो ये वही old पुराना वाला फॉर्मूला है, F equal to Kx. This is called force constant,
राइट, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, यही लिखा मैंने, ए वाई बाई एल, ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, वाई इज यंग्स मॉडुलस, एल इज लेंथ, एफ इक्वल टू के एक्स। फाइन। उसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट, ये सबको मालूम है। अब सपोज दो स्प्रिंग्स हैं, इनको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K1 प्लस K2, और इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट दो स्प्रिंग्स के लिए अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो होता है K1 K2 बाई K1 प्लस K2, राइट, वही सेम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला। सो दीज थ्री फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू यूज एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में यहां से स्टार्ट करके, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन दिस टर्म, क्वेश्चन बिकम वेरी सिंपल, राइट। So if you are not able to solve this question, if you are watching this video, then at this point again now you can pause the video. रुक जाओ यहाँ पर, pause करो वीडियो को. Now you can solve the question, right? At least एक reattempt देना बनता है इस point पर, reattempt दो, and then after that you can see the remaining video also. Okay, तो मैं straight away जा रहा हूँ अब solution पर, right? So most of you must have understood what we are going to do now. So A part. Question is what? Force constant of the composite plate along x, y, z. So मैं सबसे पहले x एक्सिस से स्टार्ट करता हूँ ना। अब मुझे अगर मॉडल करना है तो मैं इसको कैसे मॉडल करूंगा? देखो ये पूरा वेल्डेड है यहाँ पर, राइट। तो अगर इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स एफ लगाओगे तो दोनों में सेम एलोंगेशन होगा, है ना। तो ऊपर वाली जो प्लेट है, सपोज वो स्टील प्लेट है, उसको मैंने इस स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया। नीचे वाली जो प्लेट है उसको मैंने इस स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया, राइट। और यहाँ पर एक प्लेट लगा दी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, ये दोनों वेल्डेड हैं, राइट। तो वेल्डेड हैं तो दोनों में जो इलोंगेशन है, राइट, वो सेम होगा, है ना। तो इलोंगेशन अगर सेम है तो फिर नाउ दीज टू स्प्रिंग्स वी कैन मॉडल, राइट। ये पूरा जो चीज है इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे मॉडल कर सकते हैं। और यहाँ पर तो अब बस आपको मालूम ही है कि के इफेक्टिव, राइट, ये एक्स डायरेक्शन में है ना, इज इक्वल टू K1 plus K2, right? Pause the video, write K1 and K2, and then see match with this K1 and K2. Now, what is K1, right? So K1 is A Y by L, correct? What is A cross section area. So we are applying a force like this. What is cross section area? ये वाला cross section area, right? This cross section area we have to take. So what is the cross section area? Suppose the upper plate is a steel plate, lower plate is aluminium plate. तो K1 होता है A. What is area? This area is B into TS. Thickness of the steel plate is TS. So A YS divided by small. Right? सबको समझ में आया? यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट, एंड देन दिस इज द लेंथ, ओके। K2 क्या लिखेंगे? K2 इज गोइंग टू बी, बी तो बी सेम ही रहेगा, टीएस की जगह क्या होगा? एल्यूमिनियम प्लेट है तो टीए हो गया, राइट। और वाईएस की जगह क्या हो गया? वाई ए, लेंथ तो वाई है ना। बस हो गया, क्वेश्चन में कुछ और बचा नहीं है, आपको के इफेक्टिव ही निकालना है, फोर्स कांस्टेंट। तो के इफेक्टिव इज नाउ इक्वल टू K1 प्लस K2। सो B by L कॉमन ले सकते हैं हम, B by L कॉमन लिया, एंड नाउ वी गेट YS TS प्लस YA TA, राइट। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। आसान हो गया क्वेश्चन एकदम, ओके। नाउ फोर्स कांस्टेंट ऑफ द कंपोजिट प्लेट इन Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, राइट। तो एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि Z एक्सिस में क्या होगा। देखो Z एक्सिस में मतलब यहाँ पर आपको फोर्स इस फेस पर लगाना है। तो अगर स्पेस पर आपको फेस पर फोर्स लगाना है तो फिर सो आई एम गोइंग टू राइट हियर ओनली, वाई एक्सिस के लिए डिफरेंट है, सो सी पार्ट फॉर जेड एक्सिस, राइट। तो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आई विल लीव फॉर यू सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। तो जेड एक्सिस के लिए क्या होगा? अब यहाँ पर फोर्स लगाओ, राइट। सो आई विल जस्ट राइट K1. K1 is going to be, what will be the area? Area is LTS, ये वाला एरिया, राइट। अब हम ये वाला एरिया लेंगे ना, LTS,
into ys divided by लेंथ अब होगी b, राइट। वैसे ही अब k2 क्या होगा, k2 होगा l t a y a divided by b, right? k1 plus k2 is the effective force constant in z axis, z direction. ओके, फिर से वीडियो को पॉज करो, y एक्सिस में सोचो कि सेम ही है या डिफरेंट है, राइट? ओके, तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाया होगा और सोचा होगा कि y एक्सिस में अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो फिर क्या होने वाला है ना। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाएंगे तो ये प्लेट मूव करना स्टार्ट कर देगी, राइट? तो ये कंफ्यूजन आप में से कुछ बच्चों को हो रहा होगा। देखो, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए यू कैन, फॉर एक्स एक्सिस यू कैन फिक्स दिस एंड स्टार्ट अप्लाइंग द फोर्स हियर। लाइकवाइज वाई एक्सिस के लिए आप पीछे वाले प्लेट को फिक्स कर दो, देन स्टार्ट अप्लाइंग द फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस। तो जब वाई एक्सिस पर फोर्स लगाओगे तो देखो, तो ये प्लेट और ये प्लेट, राइट, दिस स्प्रिंग एंड दिस स्प्रिंग, both springs now will have same stress, right? The force applied, you are applying the force along y axis, है ना। तो अब इसका जो मॉडल है, देखो यहाँ पर अब आप फोर्स लगा रहे हो, करेक्ट, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो ये दोनों जो स्प्रिंग्स हैं, दोनों प्लेट्स हैं, है ना। जब हम सोचेंगे प्लेट्स को एज ए स्प्रिंग, तो क्या होगा, वो सीरीज में कन्वर्ट हुई है, राइट, सीरीज में कन्वर्ट हुई है, that is what. So along y-axis now, this is the diagram, right? So here K effective is equal to K1, K2 divided by K1 plus K2, okay? Again, pause the video, write K1 and K2 and then match. What is K1? Now I'm applying a force F on this, right? And which area we have to take? ये वाला area. ये है cross section area, right? ये वाला area, है ना, सबको समझ में आ रहा है। So K1 is A. What is A? A is BL YS by AY by length, right? What's length? Length is now PS. K2, same area, PL. Y, aluminium plate, YA divided by TA, right? So now this K1 and K2 we can substitute here and then find the answer, right? तो बुक में जो आंसर दे रखा है उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ है, so that you will understand while solving. Okay, fine. So if you find it useful, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, right? So that will give us the motivation of continuing and then bringing more and more questions to you, right? So here our aim is, objective is that Pathfinder is considered as a very difficult book, right? It's a difficult book. It is actually a difficult book. We will always try to present the solution in a simple way, right? Keeping average students in mind, है ना। तो ब्रिलियंट बच्चों के लिए तो बहुत सारे चैनल हैं, कई सारे चैनल हैं जिनमें डायरेक्टली सॉल्यूशन को, like without explaining the basic concept or without actually simplifying this, मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूं, they are trying to make it, instead of trying to make it simpler, they are trying to make it difficult, right? हमारा ऑब्जेक्टिव है, we are trying to make it simpler, right? So that everyone understands and then get good rank in Jeeadvanced. Fine. Thank you. We'll see you in next video. Thank you very much. Thanks for watching.